हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम करने जा रहे हैं अपने BBYCT133 का सोल्यूशन PDF डिस्कस, ठीक है। और ये BScg वाले बच्चों का है। जिन बच्चों के प्रोग्राम का नाम BScg है ये वही बच्चे दे सकते हैं, ठीक है। और या फिर जिनका BScm है, बोथ ऑफ यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है BBYCT, सबसे पहले आप असाइनमेंट लिखेंगे। इग्नू के असाइनमेंट्स हैं। आप सबसे पहले अपना फ्रंट पेज भरेंगे। फ्रंट पेज एकदम क्लियरली भरना है। फ्रंट पेज की भी मैं वीडियो डालूंगी, ठीक है। तो फ्रंट पेज बिल्कुल क्लियरली भरना है। उसके बाद आपको PDF भरना, PDF कह रही हूँ, अपनी ID कार्ड की जो PDF है ना, ID कार्ड की स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ऑनलाइन है तो। अदरवाइज ID कार्ड लगानी है, उसकी प्रिंट आउट। सबसे पहले फ्रंट पेज लगाना है, फिर ID कार्ड लगानी है। उसके बाद क्वेश्चन जो है ना, जैसे इसका क्वेश्चन पेपर है, ये इसका क्वेश्चन पेपर यहाँ से स्टार्ट है ना, तो यहाँ से इसका क्वेश्चन पेपर लगाना है। उसके बाद आंसर्स लिखने हैं आपको, ठीक है। आपका अगर क्वेश्चन ये है कि हम बिना क्वेश्चन लिखे आंसर्स भी लिखें, लेकिन लिख सकते हो आप, लेकिन क्वेश्चन नंबर मेंशन होना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना चाहते हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। दोनों अच्छे तरीके हैं, ठीक है। एंड देन आपको पता है ये वाला जो है ना, ये वो बच्चे देंगे जो बच्चे 2024 जुलाई सेशन में जिन्होंने अपना एडमिशन कराया या एडमिशन कराई है, उन बच्चों के लिए। वो जो जून में पेपर देने वाले हैं, ये उन बच्चों के लिए। और जिन बच्चों ने जनवरी 2025 में अपना एडमिशन कराया है, ये उन बच्चों के लिए भी है जो कि पेपर देंगे आप दिसंबर 2025 सेशन में, ठीक है। तो ये दोनों बच्चे दे सकते हैं, क्योंकि वैलिड फ्रॉम 1 जनवरी 2025 टू 31 दिसंबर 2025 दिया हुआ है, ठीक है। एंड एक और बात, जब भी आप लिख रहे हो ना, हर पेज के नीचे आप रिटन फॉर्मेट में दोगे। रिटन फॉर्मेट मतलब लिखा हुआ, ये नहीं कि प्रिंटेड आपने प्रिंट आउट कराई प्रिंटेड की सॉल्यूशंस की और फिर सबमिट करा दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैं कहा थी, हाँ यहाँ पे हाँ एक और बात बतानी थी आपको। जो बच्चे क्या कहते हैं एनरोल कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन दे रहे हैं, जिनका ऑनलाइन सबमिशन है ना, वो बच्चे क्या करेंगे, हर पेज के नीचे अपना नेम एंड एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, तब जाके सबमिट करेंगे, ठीक है। जो मैंने बताया ना, सब फ्रंट पेज, फिर ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आप रिटन फॉर्मेट में हर पेज के नीचे आप नेम एंड एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे अपना, उसके बाद सबमिट करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन है तो, ऑनलाइन सबमिशन है तो आपने ये करना है। अगर ऑफलाइन है तो ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में यही करना है। अगर नहीं करते हो तो रिजेक्ट हो जाता है असाइनमेंट, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा आपका असाइनमेंट सबमिशन कर, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पेपर्स पे। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट है, उनके भी अलग अलग पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसका B के भी थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर C में आपको मैचिंग करनी है। 2 का A और B पार्ट है, 3 का फर्स्ट पार्ट है, 4 का फर्स्ट पार्ट है, 5 का फर्स्ट सेकंड, 6 का A B, 7 है, 8 है, और ये सारे 10 मार्क्स 5 मार्क्स के। और मैंने जो आंसर प्रोवाइड करे ना आपको, इन पॉइंट्स में दे रखे हैं, जिससे कि टीचर खुश होगा। एंड आपको पता है पॉइंट्स में लिखने से टीचर अच्छे नंबर देता है। देन 9 का A है, फिर B है, फिर 10 का A B C D है, ठीक है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, एक A4 साइज़ की A3 ले लो, या नहीं A3 बड़ी हो जाएगी, A4 साइज शीट ले लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रंट पे सबसे ऊपर लिखना है कोर्स कोड BBYCT133, फिर कोर्स टाइटल प्लांट इकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। शाह क्लासेस काट देना, ठीक है, शाह क्लासेस नहीं लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, आंसर इन 1 वर्ड, द ग्रीन प्लांट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट टॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। इसका आंसर होगा प्रोड्यूसर्स। देन लिखना है सेकंड, अ स्टेज इन विच कम्युनिटीज रीच अ स्टेज ऑफ इक्विलिब्रिया। इसका आंसर होगा क्लाइमैक्स। देन नंबर 3 लिखना है 1 का A का थर्ड लिखना है, द ऑर्गेनिज्म दैट इज ईटन बाय अ प्रेडेटर। वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेडेटर शिकारी द्वारा खाया जाता है, प्रे कहलाता है, ठीक है। जैसे शेर हिरन को खाते हैं तो उसका वो प्रे कहलाएगा। 1 का भी डिफाइन द फॉलोइंग, इन सब चीज़ों को डिफाइन करो। अ बायोम, अ लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक हैबिटेट। बायोम के बारे में आपने पढ़ा होगा ना एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, है ना, होप समझाने की जरूरत नहीं है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द रेट ऑफ विच प्लांट्स प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर थ्रू फोटोसिंथेसिस माइनस द रेट एट विच दे रेस्पायर। पॉपुलेशन, अ ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पार्टिकुलर जोग्राफिक एरिया। अच्छा ये बताओ पॉपुलेशन में नंबर 1 कौन है, कौन सा देश है? अब यह देखो 1 का C, मैच द फॉलोइंग। एक्वेटिक प्लांट्स को आपको मैच करना है। ये सबसे पहले एक्वेटिक प्लांट्स है, उसको आप एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है आपका एक्वेटिक प्लांट्स। इसका क्वेश्चन ना आप यहाँ से बहुत अच्छे से देख के लिख सकते हो। रुको,
यहाँ से ना आप क्वेश्चन लिखो इसका, ठीक है। वहाँ पे तो थोड़ा पास पास लग रहा है ना, यहाँ से आप क्वेश्चन देख के लिखो। ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक देख के लिखो। उसके बाद इसको मिला लो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आंसर इसका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देखो, यहाँ पे क्या क्या होगा आंसर में फर्स्ट का क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। देन नंबर 2 का डी होगा आपका, नंबर 3 का होगा ए, एंड नंबर 4 का होगा बी। ऐसे ऐसे मैच मत करना, इसको क्या करना, एक्वेटिक प्लांट लिखना, फिर उसके सामने हाइड्रो शेयर करना, सिनेकोलॉजी जो भी है उसके सामने पॉपुलेशन लिखना, सामने सामने करना, या मैंने बता दिया आपको ईजिली करके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, 2 का ए, ठीक है। 2 के ए क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वेट रुको। 2 का एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ सॉइल प्रोफाइल विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल डायग्राम। आपको वेल लेबल डायग्राम बना के आपको बताना है कि जो सॉइल है उसकी प्रोफाइल कैसी है। ये वेल लेबल डायग्राम है, आपको इसकी पिक्चर बनानी है। ये पिक्चर बनाने के बाद आपको क्या करना है, इनके बारे में लिखना है। OI क्या होता है, OA क्या होता है, AEBC और साथ में R क्या होता है, ठीक है। ये इनकी वो है, डेफिनेशंस है, कहीं ना कहीं इन्होंने लेबल कर रखा है, तो ये आप लिखोगे। सेम ऐसे पिक्चर बनाना, ठीक है, सेम ऐसे पिक्चर बनाना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, 2 का बी, एनालाइज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। आंसर, हियर आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम एंड देयर इंपॉर्टेंस। बायोटिक कंपोनेंट प्रोड्यूसर्स एस्ट्रोट्रॉप्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू ऑर्गेनिक मैटर थ्रू फोटोसिंथेसिस। Consumers, heterotrophs obtain energy by consuming other organisms. Decomposers, saprotrophs break down dead organic matter process. Temperature affect metabolic rate, growth and distribution of an organism. यहाँ पे मेजर कंपोनेंट्स बताओ आप इकोसिस्टम के बारे में और उनके मेजर इंपॉर्टेंट के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जो कि जिंदा होते हैं, जो कि क्या होते हैं, लिविंग्स होते हैं। एंड नॉन बायोटिक क्या होते हैं, जिनमें जान नहीं होती, ठीक है। प्रोड्यूसर्स, बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आते हैं, प्रोड्यूसर्स जो कि नई नई चीज़ें बनाते हैं। और ऑटोट्रॉप्स फॉर एग्जांपल प्लांट्स है, कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू ऑर्गेनिक मैटर थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो सोलर एनर्जी आ रही है धूप से, वो क्या करते हैं, उसे ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं कंज्यूमर्स, मतलब जो किसी और से चीज़ें लेते हैं खाने के लिए, ना कि खुद बनाते हैं। जैसे एक प्लांट थी है जो ऑटोट्रॉप होता है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, और ट्रॉप्स मतलब जो खुद बनाता है अपना खाना, किस किस का यूज़ करके, सिंपल सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, है ना। और सॉइल के अंदर बहुत सारे जो भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं उनका यूज़ करके, है ना, वो बनाता है। लेकिन जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी और से लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग है, हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे से खाना लेते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या हम होते। और कहीं ना कहीं शेर वगैरह जो है ये भी पेड़ पौधे से खाना लेते हैं। पता कैसे, देखो इन्होंने किसको खाया, शेर ने हिरन को खाया। हिरन क्या खाता है, हिरन खाता है घास फूस। अगर घास फूस हिरन नहीं खाता तो क्या शेर खाता हिरन को, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और नॉन डायरेक्टली उन्हीं पे डिपेंड है शेर भी, पेड़ पौधों पे। तो वो भी एक तरीके का हेटेरोट्रॉप्स होता है, ठीक है। ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म, जो मैंने आपको समझाया ना वही है यहाँ पे। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो कि ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोसेसेस, ब्रेक डाउन कर देते हैं मरी हुई चीज़ों का ऑर्गेनिक मैटर में। फॉर एग्जाम्पल पत्तियाँ है, पत्तियाँ देखो किचन का वेस्ट है, वो क्या होता है, डिकम्पोजर्स द्वारा खा लिया जाता है और बाद में देखो साफ हो जाता है, सारा साफ हो जाता है। देन टेम्परेचर अफेक्ट करता है मेटाबॉलिक रेट्स, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, वाटर भी इंपॉर्टेंट है बायोटिक कंपोनेंट में, क्रूशियल फॉर लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंसेस इकोसिस्टम प्रोसेसेस एंड सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। पानी नहीं होता तो प्लांट की ग्रोथ होती नहीं होती। सॉइल प्रोवाइड्स हैबिटेट, सॉइल क्या करता है, पौधे को रहने के लिए घर देता है, बहुत अच्छा सा आवास देता है, घर देता है। न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड करता है। सपोर्ट फॉर प्लांट्स के लिए हमेशा सपोर्टिव होता है। इंपॉर्टेंस, एनर्जी फ्लो कंपोनेंट इंटरेक्ट द ट्रांसफर एनर्जी थ्रू द इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, डिकम्पोजर्स रिलीज न्यूट्रिएंट सपोर्टिंग प्लांट ग्रोथ, ठीक है। वो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं वापस से, ताकि वो प्लांट वापस से ले सके उस न्यूट्रिएंट को। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, इंटरेक्शंस अमॉन्ग कंपोनेंट मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस। बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट सपोर्ट डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स इन एंश्योरिंग इकोसिस्टम रेजिलियंस। Now 3 का क्वेश्चन नंबर A, what is ecological succession, explain the phenomena giving an example of a desert community. Ecological succession is the natural gradual process by which ecosystems change and develop over time. It involves the replacement of a biological community by another unit until a stable or climax community is established. This process occurs due to changes in the environment and interactions among organisms. Key features:
Types of succession. Primary succession occurs in barren, lifeless area, example volcanic rocks. Secondary succession take place in areas where life existed but was disturbed, example after a forest fire. Number 2, stages of succession. Pioneer stage, colonization by hardy species like lichens and mosses. And intermediate stage, establishment of grasses, shrubs and small animals. अच्छा मेरे को बता दो, तुम्हें तो पता ही होगा हर्ब shrubs और trees क्या होते हैं ना, क्लास 6 का ही कंसेप्ट है. क्लाइमेक्स स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल एंड मैच्योर कम्युनिटी. Number 3, driving factors. Environmental changes, example climate, soil formation, biological interaction, example competition, predation. Example of succession in a desert community. Pioneer species, lichens and drought tolerant algae colonize bare rocks and or sandy species help break down rock into soil particles. Soil formation, organic matter accumulates as pioneer decompose, creating a thin layer of soil. Water retaining capacity improves slightly. Intermediate stage, grass, shrubs like sagebrush and cacti start to grow. Small herbivores and insects establish their presence. Climax community, a desert ecosystem with mature vegetation such as larger cacti, example saguaro and hardy shrubs. Stable populations of desert adapted species like reptiles, birds and radon thrives. Next, conclusion of this question is, ecological succession is a vital process that shapes ecosystem, ensuring their recovery and long-term stability. In deserts, this progression transforms barren lands into functional habitats over time. Question number 4 है यहाँ पे, describe the adaptation seen in xerophytes with the help of examples and well-labeled diagrams. ठीक है, adaptation in xerophyte are plants adapted to survive in dry environments which limited water available. Their adaptations are morphological, anatomical and physiological, allowing them to conserve water and reduce transpiration. Morphological adaptation, thick cuticle leaves, heavy a waxy coating to reduce water loss, example Neem. Reduced leaf surface area, leaving are modified into spines to minimize transpiration, example cactus. Succulent tissue, stems or leaves store water, Optinia aloe. Deep root systems, root penetrate deep into the soil to access underground water, example prosopis. Anatomical adaptations, sunken stomata. Sunken are located in pits to reduce water loss by creating a humid microenvironment, example Nerium. Thickened epidermal cells are multilayered to prevent water evaporation. Hairy or scaly leaf surfaces have trichomes or scales to trap moisture and reflect sunlight, example calotropis. Number 3 is physiological adaptations. Calculation, acid metabolic cam photosynthesis occurs at night to conserve water during the day, example kalanchoe. High osmotic pressure cells maintain osmotic balance to absorb water efficiently, example of xerophytes. Cactus, Optinia spines instead of leaves, succulent stems for water storage, aloe vera thick fleshy leaves with water storage tissue, Nerium oleander thick cuticle and sunken stomata. यहाँ पे ये जो है ना डायग्राम, आपको ये बनाना है, ये वाला डायग्राम दिख रहा है आपको, क्या क्यूटिकल है, अपर एपिडर्मिस है, पैलिसेड पेरेनकाइमा है, बंडल स्टेट है, जाइलम है, फ्लोएम है, स्पॉन्जी पेरेनकाइमा है, संकन स्टेम है, हेयर है, लोअर एपिडर्मिस है. ठीक है, मैंने बता दिया अगर आपको समझ नहीं आ रहे थे. ठीक है, और ये है टीएस नेरियम लीव का डायग्राम. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट नोट्स ऑफ fidelity and important value index. Notes on fidelity and important value index. यहाँ से आंसर है. Fidelity definition. Fidelity refers to degree of association of a plant species with a specific habitat or community. Classification. High fidelity species are exclusive to particular habitat. Moderate fidelity species are found in specific habitat but may occur in others. Low fidelity species are widely distributed across habitats. Significance indicates habitat specialization and preference used to identify indicator species for ecological studies. Important value index IVI. Then definition. IVI is quantity measure of the relative importance of a species in community. Calculation. IVI is equals to, इसका फॉर्मूला ये है, relative density plus relative frequency plus relative dominance. Component. Relative density
proportion of a species individuals to the total population. Relative frequency, occurrence of species relative to others. Relative dominance, area occupied by a species compared to others. Significance, reflect the ecological role and dominance of a species, helps in understanding community structure and biodiversity. Then then 5 का fifth part, what are the different functions of herbarium? Herbarium serve multiple essential functions in botanical research and education. According to the book BBYCT133 IGNOU study material, the primary functions include. आप ना ये मत करना, ये वाली लाइन मत लिखना आप, ठीक है, ये वाली लाइन मत लिखना, आप यहीं से लिखना स्टार्ट कर देना. ये वाली लाइन नहीं लिखना, आप यहीं से लिखना. एंड एजुकेशन के आगे नंबर 1 पॉइंट डाल के आप रेफरेंस सेंटर्स लिखना, ठीक है. रेफरेंस सेंटर्स हार्बेरिया एक्ट एज रिपोजिटरीज फॉर प्लांट कलेक्शंस, प्रोवाइडिंग अ रेफरेंस फॉर प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन. डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटीज, दे सर्व एज डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स प्रिजर्विंग records of plant diversity, distribution and occurrence. Then number 3rd is research support. Herbaria facilitate taxonomic and ecological research by offering access to preserved plant specimens. Number 4th is training and education. They provide training courses for students and researchers, enhancing skill in plant identification and herbarium techniques. Number 5th is biodiversity conservation. Herbaria contribute to biodiversity conservation by maintaining records of plant species, including rare and endangered ones. These functions underscore the vital role herbaria plays in advancing botanical knowledge and conservation efforts. है ना. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्फा एंड ओमेगा टैक्सोनॉमी, है ना. ये वाला करना है आपको. इन द फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी अल्फा एंड ओमेगा टैक्सोनॉमी रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी स्टडीज़, ठीक है. या फिर वही वाली लाइन आ गई ना, इसको काट दो, इसको पूरे को काट दो. यहाँ से टैक्सोनॉमी स्टडीज से लेकर नंबर 1 लिखो अल्फा टैक्सोनॉमी, ठीक है. अल्फा टैक्सोनॉमी फोकस प्राइमरी कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नेमिंग ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ अप्रोचेस utilize observable traits to classify organisms often referred to as classical or orthodox taxonomy. Scope involve the initial phase of taxonomy dealing with the discovery and cataloging of new species. Example, describing a new plant species based on its flower structure and leaf arrangement. Number 2, omega taxonomy focus encompasses a more comprehensive analysis integrating data from various fields such as genetics, cytology, ecology and biochemistry to understand evolutionary relationships. Approaches involves a holistic examination of organisms considering multiple lines of evidence to elucidate phylogenetic connections. Scope represents an advanced phase of taxonomy aiming to construct a natural classification system that reflects. कौन सी फाइल Example, using DNA sequences data to determine the evolutionary lineage of a group of plants. These distinctions highlight the progression from basic species identification in alpha taxonomy to a more integrative and evolutionary perspective in omega taxonomy. Question number 6 का B, what are the salient features of structure of taxonomical hierarchy? The taxonomical hierarchy is a structured framework used in biological classification to organize and categorize organisms systematically. Number 1, hierarchical arrangement. Organisms are classified into a series of ranked categories formed a hierarchy from broad to specific groups. Number 2, taxonomic categories. The primary rank in his hierarchy are kingdom, phylum in animals or division in plants, class, order, family, genus, species. Each category represents a level of grouping based on shared characteristics. Number 3 is abstract nature of categories. Each taxonomy category is an abstract concept, represent a rank or level in hierarchy, not a physical entity. Number 4 is basic of classification. Classification within these categories is based on morphological, genetic and evolutionary relationships among organisms, ensuring that each group shares common features. Number 5, standardization. The hierarchical structure provides a standardized system or naming of group organisms, facilitating
clear communication and study across the scientific community. These features ensure a consistent and universally understood framework for the classification and study of the vast diversity of life. Then question number 7 is said to us, outline Bentham and Hooker's system of classification. Mention the advantages and disadvantages of the system. Bentham and Hooker's system of classification is renowned naturalist system for classifying seed plants developed by British botanist George Bentham and Joseph Dalton Hooker. This system was detailed in work Genera Plantarium 1862 to 1883. Salient features, classification scope. The system encompasses all known seed plants of the time, organizing them into 202 families and 7569 genera, covering approximately 97,205 species. Okay. Major divisions: dicotyledons, सॉरी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मेरे पास मैथ है ना, बायो नहीं है. फर्दर डिवाइडेड इनटू पॉलीपेटले प्लांट विथ फ्री पेटल्स, गैमेटोपेटले प्लांट्स विथ फ्यूज्ड पेटल्स, मोनोक्लेमिडी plants with a single whorl of parent or non, gymnosperm में seed reproducing plants without flowers, monocotyledons plants with a single cotyledon. Natural affinities emphasizes grouping plants based on natural relationships, considering morphological characteristics to reflect similarities and differences among species. Non-phylogenetic approach developed before the acceptance of evolutionary theory. The system does not incorporate phylogenetic relationships or evolutionary histories of plants. Practical utility: widely adopted in herbaria and botanical gardens, especially in British Commonwealth countries, due to comprehensive and practical framework for plant identification and classification. Advantages: comprehensive coverage, provide detailed descriptions and classification of a vast number of plant species known during the 19th century. Practical application: the system detailed organization aids in plant identification, has been extensively used in herbaria and botanical studies. Foundation for future work, served as a foundational reference for subsequent taxonomic and botanical research. Disadvantages: phylogenetic does not reflect evolutionary relationships among plant groups, as it was developed prior to the acceptance of Darwin's theory of evolution. Outdated nomenclature: some terminologies and classifications is considered obsolete in light of modern genetic and molecular findings. Artificial grouping: certain groupings such as placing gymnosperms between cotyledons and monocotyledons do not align with current understanding of plant evolution. In summary, while Bentham and Hooker's system was a monumental work in botanical classification, during it modern taxonomic have evolved to incorporate phylogenetic, पता नहीं सब फाइव बोलेंगे शाही बोलेंगे, जो भी बोलेंगे आप लिखना, ठीक है. रिलेशनशिप्स लीडिंग टू मोर नेचुरल एंड इवोल्यूशनरी बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम्स. देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे. डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम. इकोसिस्टम्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक सिस्टम, ईच encompassing various subtypes. Below in an outline of these ecosystems. Terrestrial ecosystems: forest diverse ecosystem dominating by trees, providing habitat for numerous species. Grassland: open areas with grasses and few trees, supporting grazing animals and adapted to periodic fires. Deserts: region with sparse vegetation due to low rainfall, inhabited by specially adapted flora and fauna. Number 2 point is aquatic ecosystem. Freshwater ecosystems: Atlantic still water bodies like lakes and plants, lotic floor water systems such as rivers and streams. Marine ecosystem: shallow seas, coastal waters and abundant sunlight, supporting diverse marine life. Open ocean: deep oceanic waters and with varying life forms adapted to different depths.
Brackish water ecosystem, estuaries, transitional areas where fresh water mixed with seawater, rich in nutrients and biodiversity. These classifications provide a foundational understanding of Earth's diverse ecosystems. The pyramid of energy is graphical representation illustrating the flow of energy through the trophic levels of an ecosystem. It depicts the amount of energy present at each level, emphasizing the energy loss that occurs during energy transfer. Number 1, structure of the pyramid. The pyramid is always upright with producers, example plants, at the base, followed by primary consumers, herbivorous, secondary consumers, carnivorous, and so on. Number 2, energy transfer efficiency. Approximately 10% of the energy is transferred from the trophic level to the next, while about 90% is lost to the atmosphere as heat during each transfer. Depiction of energy flow. The pyramid illustrates the amount of energy available at each trophic level, highlighting the decrease in available energy as one moves up the levels. Alignment with thermodynamics. This model aligns with the law of thermodynamics, showcasing energy loss at each transfer to another trophical level, thereby providing a more accurate reflection of energy dynamics in an ecosystem. Number 5 is comparison with other pyramids. Unlike pyramids of number and biomass, which can be either upright or inverted, the pyramid of energy is always upright, indicating a consistent decrease in energy at successive topic levels. Then understanding the pyramid of energy is crucial for comprehending how energy flows through ecosystem and efficiency of energy transfer between different trophic levels. Number 9 is said to us, write a note of pyramid of energy. pyramid of energy के ऊपर note लिखना है. Here is a note on the pyramid of energy. Definition है इसकी, the pyramid of energy represent the flow of energy in an ecosystem, showing the energy available at its trophic level. Then upright structure है इसका, it is always upright, indicating the energy decreases as it moves up the trophical level from producers to apex consumers. Number 3 is energy transfer. Only about 10% of energy is passed from one level to the next, with the remaining energy being lost as heat by organism for maintenance. Number 4 is energy efficiency. The pyramid illustrates the inefficiency of energy transfer between tropical levels, with most energy being dissipated at each level. Number 5 is always positive. Unlike pyramids of numbers or biomass, the pyramid of energy cannot be inverted as energy decreases with each trophic level. These structures help understanding the efficiency of energy flow in ecosystem. Now question number B said to us, discuss the vegetation pattern of Western Himalayas. The Western Himalayas exhibit a diverse range of vegetation pattern influenced by factors such as altitude, climate and soil types. Below in an outline of the vegetation zones in this region. Number 1, tropical and subtropical zones up to 1500 meters. Tropical evergreen forests found in the foothills. These forests are rich in species like Shorea, Robusta, Shal, Terminalia species and Textrona grandis. Teak. Subtropical broadleaf forest dominated by oak, quercus species, laurus, laris species and rhododendron species. Number 2, temperate zone 1500 to 3000 meters. Temperate broadleaf and mixed forest characterized by species such as Aesculus indica, Indian horse chestnut, Juglans regia, walnut and Carpinus viminia hornbeam. Coniferous forest comprising Pinus roxburghi, Chir pine, Cedrus, Deodara, Devdar, Kedar and Abies pindro Himalayan fir. Number 3, subalpine zone dominated by Abies spectabilis, Himalaya fir, Larix, Giffiti, Himalaya larch and Juniperus species. Number 4, alpine zone above 4000 meters, alpine shrubland and meadows comprising Juniperus species, rhododendron species and a variety of herbaceous plants. These vegetation zones are crucial for maintaining ecological balance, supporting biodiversity and influencing the climate and hydrology of the region. Number 10, write short notes on importance of endemic. Gerard Systema Nature
Therophytes. Important of endemic definition. Endemic species are those found exclusively in a species geographic area are now here else. Biodiversity significance. They contribute the unique biodiversity of their habitat, often occupying specialized ecological niches. Conserving value. Endemic are crucial for conservation efforts as their restricted distribution makes them vulnerable to extinction. Indicator species. They can serve as indicators for environmental health, reflecting the state of their ecosystem. Economic and cultural importance. Some endemic species have economic value such as medicinal plants and hold cultural significance for indigenous communities. Gerards definition. Gerards refers to ecological succession that begins in dry arid environments leading to the development of climax community. Initiation. It starts on bare dried substrate like rocks or sand dunes where water is limited. Pioneer species. The process is initiated by pioneer species such as lichens and mosses that can withstand dry conditions. Succession stages over time. These pioneers facilitate the establishment of more complex plant communities including grasses, shrubs and eventually trees. Climax community. That succession culminates in a stable climax community adapted to the dry environment. Systema naturae. Definition. Systema naturae is a seminal work of Carl Linnaeus published in 1735 that laid the foundation of modern taxonomy. Taxonomy classification is introduced a hierarchical system for classifying organisms into kingdom, classes, orders, genera and species. Binomial nomenclature. Linnaeus established the binomial nomenclature system aligning each species a two-part Latin name. Standardization. The work provides a standardized framework for naming and categorize organisms, facilitating scientific communication. Legacy. Systema naturae remains a foundational text in biology, influencing the field of taxonomy for centuries. Therophytes. Definition. Therophytes are plants that complete their life cycle rapidly during favorable conditions and survive unfavorable periods as seeds. Adaptation. These strategies allow them to endure extreme environmental conditions such as drought or cold. Habitat. Environmental found in desert, grassland and other areas with unpredictable climates. Example. Many annual plants like certain species of Arabidopsis exhibit the therophytic behavior. Ecological role. Therophytes contribute the rapid colonization of disturbed habitat and play a role in soil stabilization. सो आपका असाइनमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाता है. हमारे यहाँ पे असाइनमेंट रिटन का भी वर्क किया जाता है. अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट की नीड है तो वो आपको मिल जाएंगे. कोरियर सर्विस भी अवेलेबल है एंड PDF फॉर्मेट भी अवेलेबल है. अगर आपको नीड है, अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट करना 88001768. ओके. सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना. अपने जितने भी दोस्त हैं उन सब में शेयर कर देना वीडियो. सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. ओके. सो बाय बाय.